और ऐसे कौन से 3 आप हेयर फॉल मिथ्स बताना चाहेंगी, बस्ट करना चाहेंगी आज एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट? फर्स्ट तो जो अभी बोला कि हुँ। नीचे से बाल काटने से ऊपर से ग्रोथ होती है। तो पिगमेंटेशन और टैनिंग और मेलास्मा जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। Because a lot of patients come to my OPD, हाँ। then they say, doctor, we don't have pigmentation. हुँ, We हुँ। just have, tanning. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल, एक्ने, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन और टैनिंग जैसी कॉमन स्किन और हेयर फॉल इश्यूज की। जानेंगे इनके पीछे के रियल रीजंस और सॉल्यूशंस भी। कौन से शैम्पूज और कौन से हेयर ऑयल्स हमारे हेयर के लिए बेस्ट हैं, एंटी एजिंग के क्या अर्ली साइंस हैं जो हम ऑफन ओवरलुक कर देते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट में हम सबसे बड़ी गलतियां क्या-क्या करते हैं, मेलास्मा और पिगमेंटेशन में क्या फ़र्क है, क्या मिथ्स और फैक्ट्स हैं हेयर और स्किन से रिलेटेड। इन सभी सवालों के जवाब देने आ रही हैं बहुत ही सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट। प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ इस एपिसोड को एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता आपकी छोटी सी कोशिश किसी के लिए स्किन और हेयर प्रॉब्लम का सलूशन बन जाए। आइए शुरुआत करते हैं। So, welcome to my podcast with Shilpa. Hi, Shilpa, how are you? And it I'm was good. lovely being with you. So, can you give a brief introduction about yourself to our viewers? I'm Dr. Harkanwal Sekhon, a practicing dermatologist in Ludhiana, Punjab. I did my MBBS and MD in dermatology from Amritsar, SGRD Medical College. After that, I pursued my practice in clinical as well as aesthetic dermatology in Kaya Clinics, which is a chain of dermatology clinics, almost 75 plus clinics all over India and Middle East. तो आज की हम पॉडकास्ट की शुरुआत एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से करते हैं, दैट इज हेयर फॉल। एंड ये प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे को है। तो आप क्या रीजंस बताएंगे, बहुत कॉमन रीजंस क्या हैं अमंग मेन एंड वुमेन फॉर द हेयर फॉल? हेयर फॉल में जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, दे आर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। पीपल हैव आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। सो दिस इज द मेन रीजन, एंड ऑब्वियसली द स्ट्रेस फैक्टर्स, the lifestyle changes, and the viral fevers, COVID is there, and all other outbreaks are there. So that is taking a toll on health of people, which is showing up as hair fall. एंड लाइक जैसे कि बहुत सारे शैम्पूज होते हैं, क्या वो हेयर फॉल कॉज करते हैं? और अगर हम शैम्पू बाय करने जाते हैं तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए शैम्पू बाय करते समय, और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन सा इंग्रेडिएंट अगर हम शैम्पू बाय कर रहे हैं तो? शिल्पा, एक बहुत ही कॉमन कंसेंसस है ऑफ ऑल द डर्माटोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वुड से, हम्म। कि शैम्पू का काम सिर्फ एक डिटर्जेंट के जैसे स्कैल्प को क्लीन करना होता है। हम्म। अगर आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि शैम्पू से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, शैम्पू से आपके हेयर में ये वॉल्यूम आ जाएगा, वो सब नहीं होता है। शैम्पू का काम एज अ डिटर्जेंट, इट हैज टू क्लीन द स्कैल्प, ताकि कोई डेब्रीज ना रहे, कोई जो डेड सेल्स हैं वो क्लीन होते रहे, एंड योर स्कैल्प इज क्लीनर, योर हेयर आर क्लीनर. So हम्म। that is the only purpose of shampoos. So we should not be going for a lot of chemicals in the shampoos. Sulfate free shampoos हैं, nourishing shampoos होते हैं, तो moisturizing shampoos होते हैं, so they don't rip off the oil from the shaft and from the scalp. बाकी medicated shampoos हैं, जैसे anti fungal shampoos होते हैं. Somebody has dandruff in the hair, should हम्म। go for anti fungal, पर वो भी एक लिमिट में होता है, बिकॉज जो एंटी फंगल शैम्पूज होते हैं, केटाकोनाजोल होता है, इट लीड्स टू लॉट ऑफ ड्राइनेस ऑन द हेयर. सो दे हैव टू बी यूज्ड जुडिशियसली. हम्म। तो सिर्फ एक सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री, जस्ट फॉर द वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ स्कैल्प शैम्पूज की बस इतनी जरूरत होती है. ओके। एंड लाइक कंडीशनर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, तो डज़ इट रियली हेल्प इन द कंडीशनिंग ऑफ द हेयर?
यस दे डू सो बेसिकली कंडीशनर का काम क्या होता है कि हमारे जो हेयर हैं फ्रिजीनेस को कम करके वो दे मेक आवर हेयर स्मूदर हाउ कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस का पीछे टेक्निकलिटीज होती हैं दैट दे ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द हेयर ताकि उससे फ्रिज कम होता है जो आपका फ्रिजी हेयर है वो स्मूथ बनेगा एंड उससे टैंगलिंग कम होती है एंड प्लस हेयर ब्रेकेज की फ्रॉम द शाफ्ट वो ऑब्वियसली रिड्यूस होता है तो शैम्पूज विद कंडीशनर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट और जैसे कि मैंने बहुत जगह ऐसा पढ़ा है कि कुछ शैम्पूज में सोडियम लॉरेल सल्फेट एक इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है, तो क्या वो रियली हार्म करता है हमारे हेयर हेयर को? See, a lot of brands have come up with उनकी कुछ टेस्टिंग हुई है कुछ benzene products have been found in some of the shampoos which are considered cancerous. ओके। अकॉर्डिंग टू सोडियम लॉरल है या बेंजीन प्रोडक्ट्स हैं ये पाए गए बट द अथॉरिटीज द मेडिकल अथॉरिटीज दे गिव वार्निंग्स टाइम टू टाइम एंड देन वी हैव टू स्टॉप यूजिंग these because I remember there was a shampoo where there was an ingredient I would not name but they had some effect on the fertility in the women. ओह माय So it गॉड! was proven that it does have effect. So it was stopped. It was withdrawn from the market altogether. बाकी बेंजीन को लेके बहुत obviously it is a cancerous particle. So we should avoid such things. और अगर ऑयलिंग So अब that's why I say chemical free and just because why people go through all this, why they go for all the expensive shampoos is that they think the shampoo will give them volume, the shampoo will give them a reduction in hair fall. That's why they go for these chemicals. But shampoo का काम सिर्फ एक बालों को clean करना होता है, debris को clean करना होता है, same as detergent and same as a face wash does to your face. Same is the job of shampoo. So we should minimize the use of chemicals on the scalp. एंड लाइक जैसे कि हमारे अगर हमें ऑयलिंग करनी है अपने हेयर की, किसी के ऑयली हेयर हैं या ड्राई हेयर हैं या बहुत सारे लोगों को फ्रिजी हेयर होते हैं, तो कौन-सा टाइप ऑफ ऑयल ऐसे हेयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? और हाउ मेनी टाइम्स अ वीक हमें आइडियली ऑयलिंग करनी चाहिए? Oiling is a part of traditional medicine of India. हुँ, हुँ। So our grandmothers were oiling the हुँ, hair, our हुँ। mothers were oiling the hair. You know, it was a childhood memory that some of the relatives would oil the hair. हुँ, So हुँ। there is nothing wrong in oiling the hair. हुँ। So I really recommend the only oil which is very, very safe and always works in nourishment of the hair is the coconut oil. हुँ, हुँ। You can just close your eyes and use coconut oil, and that too very, very traditional. That coconut oil which used to freeze in the winters. हुँ, हुँ। So that coconut oil is very good for oiling the hair. But here the catch is some people what they do is they do overnight oiling. हुँ, That they हुँ। just apply the oil and they just keep it overnight. हुँ। That is not recommended. That is like slugging your hair follicles with the oil. हुँ, हुँ। That shouldn't be done. It should be, completely massaged in the hair follicles, hair roots, हुँ, हुँ। and keep it for an hour or so, and then just wash it off completely with a shampoo हुँ, हुँ। because it helps in your blood circulation in the scalp and also relaxation. It gives nourishment to the hair, and you have to wash it. Otherwise, you'll get breakouts of acne and some sort of folliculitis in the hair, in the हुँ, हुँ। scalp. So that is not recommended. You need to wash it after an hour. ओके। एंड अगर किसी के ऑयली हेयर हैं तो उसके लिए भी कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट? Yes, yes. I always recommend coconut oil only. कई लोग करते हैं कि आंवला का करते हैं. हुँ, They make it कड़वा तेल जिसको कहते हैं काले हुँ, रंग का वो बना and they do हुँ, that. I personally do not recommend it because I have seen personally a lot of allergic reactions on people with all that. हुँ, So हुँ, they put a lot of rita and amla and everything in an oil and they do it. Some people also use the onion हुँ, in हुँ, the oil. I हाँ, really do not recommend that. ओके, It has caused a lot of scarring and irritation and burning in the scalp. हुँ, हुँ, So, what ingredient will be allergic towards you or your skin? You don't know. So, हुँ, coconut oil is the safest option and can be done once in a week very, very nicely. ओके। एंड क्या
कोई ऐसी आप डाइट बता सकते हैं जो लोग ले सकते हैं टू प्रिवेंट द हेयर फॉल? High protein diet. Only one answer, and just solves everything. Protein is very good in shaft making of the hair. So it gives you, if you are going through any kind of hair loss, it can be because of any reasons. So if your diet is protein rich and is rich in antioxidants, you can come out of any kind of hair fall at any time. So all the sources which are rich in protein should be taken if you are going through some kind of hair fall. ओके। और क्या जैसे कि किसी को बहुत स्ट्रेस है आजकल, हर किसी को बहुत स्ट्रेस रहता है, या कई बारी लोग अपने वर्क शेड्यूल की वजह से लैक ऑफ स्लीप उनका होता है, इतना प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले पाते, तो क्या वो चीज़ें भी हेयर लॉस को कंट्रीब्यूट करती हैं? See, stress has a direct role on the hormones. हम्म। So, stress and lifestyle have a direct impact on your hormonal balance, हम्म। and your whole body is dependent on your hormonal balance. हम्म। If you're not sleeping right, if you are not eating at time, if your lifestyle is not good, if you are not working out, it will have a toll on your hormones at some point of time. हम्म। So, all that will reflect on your skin, on हम्म। your hair, with all its hormonal imbalance is the major factor हम्म। in the hair fall, also in women, also in men also. So stress and lifestyle, everything has an impact on hormones, so it does reflect as hair fall as well. ओके। तो जैसे आपने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करी, तो जैसे बहुत सारी वुमेन्स में आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ऐसे में वो क्या रोल प्ले करता है उसको आपके हेयर फॉल को कॉज करने में? मैंने जो स्टार्टिंग में बात करी थी, बिकॉज वेन एवर अ पेशेंट गोज टू डॉक्टर, जब भी वो जाके कहते हैं कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो वी एज अ डॉक्टर वी सी थिंग्स. सो हम सबसे पहले जो चीज चेक करते हैं वो ये करते हैं कि उसको किस तरीके का हेयर फॉल है, उसका पैटर्न क्या है, उसको हेयर फॉल कहाँ से होता है. तो डॉक्टर आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछता है. तो जो हार्मोनल हेयर फॉल है वो उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं इज कि जैसे इन विमेन, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट विमेन फर्स्ट, आपका जो फ्रंटल हेयर होगा, जो आपकी सेंट्रल पार्टीशन होती है इन विमेन, वो वाइडन होनी शुरू हो जाती है अगर आपको हार्मोनल हेयर लॉस होता है. आपके जो फ्रंटल हेयर हैं वो थिन होने शुरू हो जाते हैं, पतले शुरू हो जाते हैं, और आपका स्कैल्प ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है. उससे जो आपकी सेंट्रल पार्टीशन होती है वो ज्यादा वाइडेंट लगने लग जाती है. ये एक फर्स्ट साइन होता है हार्मोनल हेयर लॉस इन विमेन का. इसको हम फीमेल पैटर्न लॉस भी कहते हैं. Same way, men के अंदर, if you might have seen around you, um, you might have seen कि आपकी जो men के अंदर, your frontal hairline starts receding, वो पीछे जानी शुरू हो जाती है. यहाँ से लड़कों के बाल उगने शुरू हो जाते हैं, और उनका भी जो फ्रंटल एरिया होता है वहां से आपको बाल पतले दिखने शुरू हो जाते हैं और स्कैल्प ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है. ये एक पैटर्न होता है. हमेशा जब भी हेयर हार्मोनल हेयर लॉस होगा तो ये पैटर्न मेन में भी और वुमेन में भी फॉलो होता है. सो दिस इज द फर्स्ट साइन विच यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड. ओके। और कई बारी क्या है आजकल, बहुत सारी सिटीज़ में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ सिटीज़ में हार्ड वाटर बहुत आता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं अ, अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए? हार्ड वाटर किस तरीके से अफेक्ट करता है बालों को, इज कि वो बालों को ड्राई करता है. हुँ, एक हुँ। केमिकल्स की लेयर बन जाती है ऑन योर हेयर, हुँ, और हुँ। कुछ भी नरिशिंग आप यूज करोगे वो अंदर पेनेट्रेट नहीं होता है. हुँ, तो बाल सूखे लगते हैं, बाल ड्राई लगते हैं, बाल फ्रिजी लगते हैं. ये हुँ। हार्ड वाटर का, पोल्यूशन का इफेक्ट होता है बालों के ऊपर. हुँ, सो हुँ। व्हाट यू कैन डू इज, आजकल हार्ड वाटर ट्रांसड्यूसर्स आते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के जार्स आते हैं. सो सम यू कैन यूज दैट ऑल्सो. अगर आप नहीं अवेल कर सकते हैं, देन यू कैन नरिश, यू कैन ऑयल योर हेयर. हुँ, हुँ। You can use good moisturizing shampoos for the hair. हुँ, So हुँ। that will help. And obviously, you always have to use conditioner हुँ, if you हुँ। are facing through hard water complaints in your area. हुँ, हुँ। That helps. दैट हेल्प्स।
और जैसे कि मॉनसून या विंटर आता है तब हम अपना हेयर फॉल ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? मैम, जैसे हर चीज का एक साइकिल होता है, लाइफ हम्म। साइकिल होता है, वैसे ही बालों का एक लाइफ साइकिल होता है। सो हम्म। उसमें क्या होता है कि सीजनल ऑल्सो, एज हम्म। यू सेड कि रेन सीजन में होता है। सो हम्म। हमारा जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है इन द ईयर, दैट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर हम्म। हेयर ग्रोथ। हम्म। मैक्सिमम हेयर इन मार्च एंड अप्रैल। हम्म। उसके बाद क्या होता है कि शेडिंग फेज शुरू हो जाता है। हम्म। शेडिंग फेज में तब रेनी सीजन भी आ जाता है, एंड रेनी सीजन कॉजेज अ लॉट ऑफ फ्रिज इन द हेयर। हम्म। ह्यूमिडिटी होती है एंड बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर होते हैं, एंड दैट ऑल्सो गिव्स लॉट ऑफ हेयर फॉल। सो दो हम्म। तीन फैक्टर्स हैं, एक तो हेयर साइकिल का है, प्लस एक फ्रिजीनेस है इन द हेयर, सो दैट मेक्स द स्कैल्प वेरी वेरी ऑयली बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, एंड sticky because of all the sweat which is there, and also the hair cycle is at the shedding phase. So हम्म। all these factors compound to rainy season being the shedding season. हम्म। एंड जैसे कि कई बारी हम कहते हैं कि हमारे हेयर कहीं ना कहीं जेनेटिक होते हैं, कि जैसे हमारी दादी हैं या हमारी मदर हैं या फादर है, उनका जैसा हेयर थिकनेस थी या हेयर की क्वालिटी थी वैसे वो पास ऑन होता है। तो क्या ये जो जेनेटिक है, अगर किसी का मान लीजिए किसी के बहुत थिन हेयर है या है, तो क्या ये इसको हम प्रिवेंट या डिले कर सकते हैं? नहीं। No, we cannot change the genes. We हम्म। cannot make, अगर किसी का जैसे in the previous generation किसी के पतले बाल हैं and you inherit that, so you हम्म। cannot change it. You can texture of your hair. Obviously, you can use some products which can thicken the hair, but you हम्म। cannot choose. Whatever you're born with, the texture will remain the same. सेम। You cannot change the texture of your hair. ओके। और जैसे कि कौन कौन से ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में लेटेस्ट, जो कि हमें हेल्प करते हैं हेयर रीग्रोथ में? Shilpa, that question also depends on first the assessment of loss. हम्म। लॉस, जो हेयर लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो किस हम्म। तरीके का हेयर लॉस है। हम्म। हर टाइप ऑफ, सी हम हेयर लॉस को एलोपेशिया कहते हैं। हम्म। सो एलोपेशिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इट कैन बी हम्म। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इट हम्म। कैन बी एलोपेशिया एरियाटा, इट कैन बी टीलोजन एफ्लूवियम। तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब भी आप जाओगे, तो वो हम्म। असेस करते हैं कि दिस पर्टिकुलर पेशेंट, इसमें क्या रीजंस हैं हेयर लॉस के, क्या पैटर्न है हेयर लॉस का। तो हम्म। उस सब हेयर लॉस की ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स, मेडिसिन सब डिफरेंट होता है, बिकॉज हम्म। उनके रीजंस, उनके कॉजेज डिफरेंट होते हैं। हम्म। सो जैसे फीमेल में हार्मोनल हेयर लॉस है, या हम्म। मेल्स में हार्मोनल हेयर लॉस है, उसको मेडिकल टर्म्स में हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें पीआरपी है, विच इज हम्म। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हम्म। वर्क्स वंडरफुल इन हम्म। हेयर लॉस इन दैट, बिकॉज जो उसमें पीआरपी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके हेयर की थिनिंग को कम करते हैं, रिवर्स करते हैं, प्लस हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हम्म। उसके साथ आजकल एक्सोसोम्स इज द न्यू मेडिकेशन विच इज द एडवांसमेंट। हम्म। एक्सोसोम्स आर सिग्नलिंग पार्टिकल्स। ऐसे ही we in our clinics we have launched MCT, which is metal cell technology, हम्म। where we're talking about cellular level of hair growth. So there's a lot of advancement in hair treatments. सिमिलरली अगर किसी को एलोपेशिया एरियाटा है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कीड़ा लग जाना कहते हैं, हम्म। कि आपके पैचेस हो जाते हैं मेल्स में इन द बियर्ड और एंड सम पार्ट्स, तो उसमें द ट्रीटमेंट्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वी डू नॉट नीड पीआरपीज इन दैट केस, वी हम्म। नीड सम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। सो इट्स फर्स्ट द असेसमेंट देन द ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट। तो जैसे आपने पीआरपी ट्रीटमेंट बताया, तो इसकी क्या कॉस्ट आती है और ये कितने टाइम में रिजल्ट शो करता है लोगों को? PRP key depends on the system, on the center where you are going, हम्म। because PRP में टेक्निकलिटीज होती हैं जो मशीनरी यूज करते हैं, because it is your own blood, we are हम्म। not putting anything from our side, हम्म। but we are processing your, हम्म।
तो जो कॉस्ट होता है वो प्रोसेसिंग का होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody comes to me for PRP, so I'll be taking a fixed amount of blood. It is not like I fill a bag of blood. I do not need that much. We हम्म just need a vial of blood. हम्म जैसे आप कभी कोई टेस्ट कराने जाते हो तो वो एक छोटी सी वायल भरते हैं, हमें बस उतना ही ब्लड चाहिए होता है इन PRP. हम्म तो हम उसको अपनी मशीनरी के साथ हम उसको प्रोसेस करते हैं. उसमें से हमने येलो पार्ट निकालना है. हम्म येलो पार्ट को आप कितनी टेक्निकलिटी से निकाल सकते हो, ये हम्म मशीन टू मशीन वेरी करता है. एंड machines can be expensive, machines can be cheap also. So हम्म the cost of the center will depend on that, what kind of machinery do they have. But in हम्म general, in India, I would say the cost varies for between 5,000 to 10,000 हम्म per session. So the person is always advised to take 5 to 6 sessions of it. हम्म मंथ के गैप पे, एक महीने के गैप पे होते हैं, बिकॉज इट इज एन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट एंड वी हैव टू विथड्रॉ द ब्लड. सो आई डू नॉट प्रेफर डूइंग इट less than 1 month. I always give a gap of 1 month and then I do the sessions, and 5 to 6 sessions. But do the treatment results usually in hair take up to 5 to 6 months to show any kind of results, because the hair growth is very, very slow. So to show 1 centimeter of hair growth in the scalp, you need at least 5 to 6 months. हम्म। और आपके हिसाब से कितना हेयर फॉल नॉर्मल है एक दिन में? जैसे कोई भी पर्सन है, हर किसी को थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है, तो आपके हिसाब से वो कितना हेयर फॉल नॉर्मल होता है? We take as doctors, we all, क्योंकि पेशेंट हमेशा आके कहता है कि डॉक्टर मेरा तो सारा बाल गिर गया, मेरे तो हम्म गुच्छों के जैसे बाल आते हैं, मेरा हाँ बाथरूम भरता है, हम्म जब हम नहाते हैं मेरे सारे बाल गिर जाएंगे. सो less than 100 hair if you're हम्म losing in a day is हम्म normal. It's हम्म totally normal. हम्म अगर मोर देन 100 है तो हम्म प्रॉब्लमेटिक है. देन वी हम्म टेस्ट, वी असेस, वी ट्रीट. हम्म But less than 100, obviously, women, though, if you have 5 hair in your comb at the हम्म end of brushing your hair, you will be tensed, you know. हम्म But yes, if it is less than 100, then हम्म it's all right. If it is हम्म। more than 100, then you need to take some treatment. हाँ, हम लोग थोड़ा सा भी हेयर देखते हैं तो वी गेट वरिड कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, राइट? Yeah. हाँ। और आजकल जैसे कि जो हेयर स्टाइलिंग टूल्स आते हैं या हीटिंग टूल्स आते हैं, या कई बारी हम लोग बहुत टाइट हेयर स्टाइल कर देते हैं बच्चों के लिए भी, तो मैंने ऐसा पढ़ा कि वो काफी हद तक डैमेज करता है बालों को। तो क्या ये बात सही है? Yes, yes, you're totally right. हम्म There is a disease which is called tractional alopecia. हम्म ट्रैक्शनल एलोपेशिया तब होता है जब हम अपने बालों को बहुत कस के इन द रबर बैंड्स और हेयर बैंड्स और हम्म पोनीज करते हैं या फिर ब्रेड्स करते हैं. हम्म अगर बहुत कस के बाल बांधोगे तो बाल खिंचता है और बाल टूटता है. उसको हम्म हम ट्रैक्शनल एलोपेशिया कहते हैं. हम्म बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, बिकॉज व्हेन द मदर्स आर गेटिंग देम रेडी फॉर द स्कूल, वो हम्म ब्रेड्स. और आजकल तो घुमा घुमा के पता नहीं कैसे पिन्स लगा के. हम्म So bring the child to me sometimes in OPD, and the child has all the pins in the hair and braids all over here. यहाँ से इधर जा रहे हैं और यहाँ से इधर braids जा रहे हैं. So we see them and they say कि डॉक्टर बाल गिर रहा है. Then my answer is like, you know क्यों बाल क्यों गिर रहा है. हम्म They pulled the hair, and traction will cause hair loss. And usually यहाँ पे देखा जाता है in women, because we tie up our hair like that. So यहाँ पे अगर आपके बाल thin हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो that is part of tractional alopecia. You should totally avoid binding your hair like that. एंड जैसे कि आजकल ऑफिस में आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं या मैरिजेस हैं या कोई फंक्शंस हैं, तो हम सब वुमेन्स को वी लाइक टू हेयर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग, या फिर हम स्टाइलिंग टूल्स हमें कई बार होता है कि यूज़ करना ही है हमें। तो उसके लिए मतलब हमारे हेयर डैमेज ना हो, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या दो चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं अगर हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर हेयर स्टाइलिंग? So first thing is using the hair protectants. हम्म I'm sure अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली स्टाइल करते हैं, हम्म फ्रीक्वेंटली टॉन्स यूज कर रहे हैं, तो आप हेयर प्रोटेक्टेंट बहुत
commonly use करते ही हैं. 100% of the women are using it because you cannot just expose your hair shaft to the burning iron rod or anything without the hair, heat protectant. Again, I would say just avoid as much as possible. And in case you have to do it, like occasionally, if you're doing it just once in a month or twice in a month, that's all right. You can just nourish your hair, you can condition it, you can oil it later. But use heat protectant and do not use the direct heat on the shaft also. Like these days, we are in the world of Dyson now. So it's an amazing technology which does not use direct. It is heated. If you have ever used a Dyson, you would know it is heated. The hot air is coming, but the flat iron has the tongs which are actually hot, and your hair is in the center, and you are just exposing the shaft to direct heat. But in Dyson, you're not exposing the shaft to direct heat. It is just like the heated air which is coming out. So you can avoid. You can use these kind of technology. They're very good for hair. ओके एंड लाइक अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, किसी को क्रोनिक हेयर लॉस है या बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर लॉस है, तो क्या वो एक सेफ और परमानेंट सॉल्यूशन है और इसकी क्या कॉस्ट आती है? Ma'am, I don't know if you've heard of it. India may, even in international, I have seen it. A lot of cases of hair transplant turning into, disasters. So उसका एक reason होता है. People are shopping hair transplant centers these days. So it is like they just go there and they just ask, 5,000 grafts ka cost kya hai. So wherever they go, wherever they're cheaper, so they just get it done. So what is happening is everywhere in the salons and everywhere they are opening hair transplant centers because obviously it's an easy money and everybody needs. But the only thing which matters here is the presence of doctor. It is a very, very major surgery which goes for 5 to 6 hours. If you're doing 5,000 grafts, it may go for 2 days also. You have to be given anesthesia. Anesthetist is needed for that matter. And you have to come out of the anesthesia also after the procedure. So it should be considered as a major surgery, which is done in presence of a trained dermatologist or a plastic surgeon and anesthetist. So you shouldn't be shopping about it. That obviously people who are not trained in the field, they would be charging less, and people are getting it done from, and they are facing a lot of complications also for this. So hair transplant is a safe treatment if you get it done from an authentic center. If you are willing to pay around about 1 to 2 lakhs to probably, really depends on the grafts, how much area is involved, how much you have to do. Costing varies between 1 to 3 lakhs also in that matter. एंड लाइक आपकी एक नंबर वन टिप एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होगी टू हैव एन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर? Eat well. Eat well. Okay. Yeah, eat well because whatever you eat shows on your hair and skin. If you are eating well, it shows on your hair also. So And if your hair is falling, there is something wrong in the internal system. And especially like you said earlier कि protein diet is a must. Yeah. और एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इन एंड अराउंड फैमिली, फ्रेंड्स और आप किसी गैदरिंग में जाते हो, लाइक पहले के कंपैरिजन में मैंने आज की डेट में देखा है कि मेंस हैव मोर हेयर फॉल देन वुमेन्स। ऐसा क्यों हुआ है? पहले ऐसा नहीं होता था हमारे फादर या ग्रैंडफादर के टाइम पर, बट आज की डेट में मैं यंग एज में भी देख रही हूँ कि मेंस हैव मोर हेयर फॉल देन वुमेन्स। So I see, like, yesterday there was a 17-year-old boy in OPD with the complete hair fall. Oh my God. Yeah, so it's very, very common. They are getting it done. They are getting hair fall in very, very young ages. Now, earlier we never used to see less than 25-year-old patient for hair loss in our OPDs, but these days it's just like less than 30-year-olds because they are mainly concerned. They're not married and they're running that, if they lose all the hair, what's going to happen? So again, it's lifestyle. It's stress in the Gen Z era. So they're all, Generation Z people, and stress, nutritional deficiencies again.
turning into hormonal imbalances and causing hair loss. It's all about the generation. It's all about the, the environment they're living in, the stress factor. So it's totally different these days. The diseases of skin and hair are totally dependent on the generations we are living in. और आजकल हेयर कलरिंग बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो क्या हेयर कलरिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर I am not against hair coloring. I am really not against hair coloring. I'm just against hair bleaching. ओके। The hair bleach is something which damages your hair हुँ, shaft. हुँ, It just breaks your hair shaft. So हुँ, basically, what happens is if you just understand your hair shaft is made up of protein. हुँ, So there are something called disulfide bonds in that shaft. So हुँ, whenever they use the bleach, they just break that hair shaft bonds so हुँ, that the color goes inside. हुँ, They have to break that bond to for the color to seep inside. So हुँ, the bleach actually breaks down the shaft of the hair. हुँ, They can call it anything. They can call it pre-lights or whatever, but it is bleach. हुँ, So my problem only is with hair bleach, not with hair color. If you just want to do a global hair color, and if you want to just hide out your grays with the hair color touch up, go ahead with that. These days we have ammonia free everything. हुँ, So go ahead with that, but don't bleach. Do not use pre-lights. Do not, blonde your hair from black. हुँ। That will damage the hair. तो वो जो जैसे डाइज़ आती हैं जिनमें लिखा रहता है अमोनिया फ्री, दैट इज़ गुड, मतलब Ammonia free is good. Yeah. गुड, ओके। और जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दादी-नानी थी, वो हमें कई बारी मदर्स हैं, वो बोलती थी कि वन्स इन अ मंथ अगर आप नीचे से ट्रिमिंग करा लो, तो इट हेल्प्स इन द हेयर ग्रोथ, बेटर होता है, स्प्लिट एंड्स और ये तो ये बात क्या सही है? Nahi, ma'am. Your hair grows from the root, not from the from the ends. ओके। You know, ऐसा the बोला hair जाता था कि नीचे से ट्रिमिंग Yes, करा लो I तो know. But हाँ। yeah, your hair looks cleaner with a timely haircut. It's part of the grooming. हुँ, You should get timely haircut because the hair, shafts and the ends of the hair get damaged हुँ, हुँ, with time. So हुँ, you should get them cut regularly हुँ, for the neater and cleaner look. हुँ, Obviously, the split ends are there in the ends. You give a neater look if you actually get the hair cut repeatedly. It's part हुँ, of the hygiene. It was taught in the schools also. But yeah, there has nothing to do with the hair growth. It doesn't happen. हुँ। और ऐसे कौन से 3 आप हेयर फॉल मिथ्स बताना चाहेंगी, बस्ट करना चाहेंगी आज एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट? फर्स्ट तो जो अभी बोला कि हुँ। नीचे से बाल काटने से ऊपर से ग्रोथ होती है. हुँ, Yeah. Second one, which I will talk about, is the hair shampoos. Because a lot of marketing is being done. This is a anti hair fall shampoo. There's हुँ, nothing हुँ, like that. It's all हुँ, complete myth. हुँ, 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 Shampoo just for cleaning the hair. हुँ, The third thing I'll talk about is the you might have heard about this trend where the girls were combing the hair 100 times. हुँ, You have to comb the hair 100, brush your hair 100 times to get the better hair. That's a complete myth. There's nothing behind it. राइट। तो अब जो मेरा सेकंड पार्ट है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, जो आई थिंक सब लोग फेस करते हैं, दैट इज़ एक्ने। तो आपका क्या ये बात सही है कि ऑयली फूड खाने से आपके एक्नीज़ होते हैं, पिंपल्स फॉर्म करते हैं? Yes. So, acne के causative factors में food is the main culprit. हुँ, हुँ, हुँ। So, a lot of people ask in the OPD, like, "Hey, doctor, what all I have to stop?" So, I start with all your favorite things. Chocolate has to stop, oily food has to stop, fried and junk has to stop, chips, kurkure has to stop, dessert has to stop, creamy dairy products have to stop. हुँ, So हुँ, all these dietary things have a direct impact on pimples. So you get breakout if you do have a dessert outside in the morning. You might see 2 or 3 zits every time. So we always ask to avoid oily food. और एक्ने प्रो स्किन अगर किसी की है, तो उसके लिए बेस्ट फूड क्या है जो वो अपनी डाइट में ले सकता है? Anything seasonal, healthy food. हुँ, हुँ, हुँ।
So basically, I just advise to add food which is good for skin, which Mhm, includes some antioxidant rich foods like vitamin C rich foods, vitamin E rich foods like blueberries are there, strawberries are there, mhm, oranges, and lemon. All these foods are very good for skin. They actually show some results on the skin as well. Nuts are there. You get some omega-3 and antioxidants from them. All these things are good. mhm. Anything seasonal, anything healthy is good. गुड। ओके एंड जैसे कि हमारा कोई छोटा-सा पिंपल है, वो फ़ॉर्म होता है, तो आप क्या 2 वेज़ बताएँगी कि हम जैसे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, छोटा-सा भी हमने एक्ने अपने फेस पे देखा या पिंपल देखा, तो उसको बिगर फ़ॉर्म होने से हम कैसे बचा सकते हैं? Also, if you have a wedding to attend next day, राइट। they always just come out a day before the function. Yes, it does. So you can wash your face very nicely 2, 3 times in a day, and you can just apply if you have some kind of adapalene, I would say, or an topical antibiotic like clindamycin is there, nadifloxacin is there. You can just apply that on the pimple just 1 night or 2 nights prior to it, and you will see some difference, obviously. But I'm really against the patches. हुँ, हुँ। People use pimple patches. हुँ, I हुँ। sometimes I just really don't find them very hygienic or healthy because you're occluding the pus-filled acne. हुँ, You're हुँ। actually giving the bacteria, the anaerobic atmosphere to grow more. हुँ, हुँ, So I हुँ। am just against it. Just dab the antibiotic on the face at night, and you will see difference by morning. हुँ, हुँ। एंड लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में आते हैं जो कहते हैं आपकी एक्ने आप फेस वॉश करेंगे तो ग्रो नहीं करेगा या आगे और बढ़ेगा नहीं या क्रीम्स आती हैं तो डू दे रियली वर्क? Yes, in this case, they do work. हम्म। Unlike hair, where shampoos claim all these things, on the हम्म। skin, if you have acne-prone skin, so there are face washes which have salicylic acid, which have हम्म। glycolic acid. They हम्म। actually help in removing the excess oil from the skin, हम्म। uh, removing the excess oil from the pores. हम्म। So that is a causative factor. Excess हम्म। oil on the face and clogged pores is the reason for getting pimples. So all these face washes, they do help in cleaning that face. So हम्म। you do get a reduction in acne with use of all these products. रिलैक्स। ओके। और जैसे कि कई बारी हम छोटे थे, अगर कभी कुछ एक पिंपल छोटा सा आ जाता था तो हमें बोला जाता था कि यू कैन अप्लाई टूथपेस्ट, इट विल नॉट हर्ट। तो क्या ये बात सही है? Toothpaste nahi sahi hai. Toothpaste is not. You should not apply toothpaste on the face for anything. एक्ने के ऊपर भी टूथपेस्ट लगाते हैं, बर्न्स के ऊपर भी टूथपेस्ट लगाते हैं, ये भी कहते हैं कि कुछ जल जाए, अगर कुछ हाथ पैर में कुछ जल जाए तो भी टूथपेस्ट लगाते हैं. It's a completely you are putting a lot of chemicals on the face for that matter, and it does lead to some contact dermatitis and allergies on the face and worsens the condition if you apply toothpaste on that. क्या पिंपल्स को पॉप करना सही है या हमें उसको खुद से हील होने देना चाहिए? No, you should never pop the pimple. You should हुँ, never. What happens basically is when you are picking on your pimples, हुँ, हुँ, you're putting bacteria inside that inflamed skin हुँ, through हुँ, your nails and your fingertips. हुँ, हुँ, So what happens is that inflammation पहले से ही redness हुई होती है, उसके ऊपर से आप बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने नेल्स के थ्रू, अपने टिप्स के थ्रू दैट हुँ, skin, and that leads to pus formation in that area, and that leads to aggravation of your pimples. वो बढ़ जाते हैं, वो बैक्टीरिया ग्रो ज्यादा करता है. हुँ, तो हुँ, इसलिए कभी भी, एंड ऑल्सो जब भी आप पिंपल को पिक करोगे तो वो टूट जाता है, हुँ, हुँ, pus flows out, and that leaves marks on the face. ओके, वो हील नहीं होता है प्रॉपरली, वो मार्क्स छोड़ के जाता है, हुँ। एंड इन सम केसेस खड्डे जो पिट्स होते हैं वो भी बना के जाता है. सो पिंपल पॉपिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर एक्ने. तो अगर ऐसे कुछ मार्क्स आ जाते हैं, मान लीजिए स्कार्स आ जाते हैं, तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आने के लिए? सो यू शुड, इवन इफ अगर आपके एक्ने है
फेस के ऊपर, आपको हमेशा सनस्क्रीन लगानी चाहिए। हम्म इसके दो फायदे होते हैं। हम्म जब आप सनस्क्रीन लगाते हो, आपकी स्किन जब पिंपल हुआ होता है तो आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड है। इन्फ्लेम से मेरा मतलब है कि आपकी स्किन रेड हुई हुई है, हम्म वो ज्यादा सेंसिटिव है टू सन। सो हम्म अगर आप उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाते हो, सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम द सन। हम्म और धूप ने ही वो रेडनेस को काला करना है ओवर टाइम। हम्म ठीक है, तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्ट करते हो। जब एक्ने है, सनस्क्रीन लगाओ, जब बाहर जाना है फेस को कवर्ड रखो, हम्म ताकि धूप से वो एक्ने का एरिया काला ना हो। हम्म So this is prevention. So हम्म you should prevent it. Second is, in case आपके प्रॉब्लम हो गई है, आपके एक्ने के मार्क्स आ गए हैं, then there are certain medications and the creams you can apply on the darker areas and some treatments you can take from your dermatologist to get over it. जैसे कि ये एक्ने प्रोडक्ट्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो क्या ये यूज़फुल होते हैं वाकई में? I am against the influencer market these days. हम्म Why? Because I'm not against everybody. So some people are very, very authentic and giving the right information. हम्म But majority of these people are actually speaking what they're paid for. हम्म So the newer companies who do not have any customer base or anything, do not have any research base about their products, they are hiring these influencers because they have a following of like good 20,000, 30,000, 50,000 people. So they promote their product through them these days. This is a because the doctors will not write their products हम्म because we do not find anything authentic in them. So they use the influencers to actually spread the word. So if you see 10 influencers at the same time talking about the same product, you should understand it's fake. You should understand they're being paid for it. So this market buzz which is created by the companies through the influencers is just marketing and nothing else. So you should always listen to influencers, okay, but confirm it through your doctor or some specialist before using it. एंड जैसे कि हमारा क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए मॉर्निंग में और इवनिंग में टू प्रिवेंट एक्ने? So it should be simple. It should be bare minimum. It should be simple. First of all, use a good face wash in the morning, which cleans your skin, which cleans the excess oil on the skin. It should be salicylic acid based or glycolic acid based. Then you can use some good moisturizer on the face, which is good for acne prone skin. Mind you, acne prone skin also needs a moisturizer. ये नहीं है कि मेरा skin बहुत oily है, मुझे moisturizer की जरूरत नहीं है. No, you need it, but non-comedogenic moisturizer for acne prone skin, and top it off with the good sunscreen. As I mentioned, sunscreen helps you protect your skin from the darkness after. And at night time, you can use the same face wash in the morning as you used in the morning. And on top of it, you should use a moisturizer. And the last thing you should use is the spot treatments on the acne or on the marks which are there. And that treatment should be given to you by your dermatologist looking at your condition. You have a pus-filled acne, you have whiteheads, blackheads on your face. The treatment varies. It varies with all the conditions. ओके, तो हमारा जो सनस्क्रीन हम यूज़ करते हैं बिफोर गोइंग टू द सन, स्पेशली जो कहते हैं 12 बजे से 5 बजे की धूप होती है, उसमें हमें डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो क्या एसपीएफ होना चाहिए उसका सनस्क्रीन का मिनिमम? और डज इट रियली हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्नेस और टैनिंग और एवरीथिंग? So sunscreen does not help in acne and does not help in prevention of acne. It helps in prevention of acne-based pigmentation. ओके। So sunscreen जो है हम Indian skin के लिए, so people run a lot, chase a lot the SPF. You know that doctor, I need SPF 50, I need SPF 70, and these days there is SPF 100 also, which has come up new. So for the Indian skin, we are brown people. We are gifted with melanin. It's a gift. So it is protecting us from sun. But that said, doesn't mean that we do not need sunscreen. We do need sunscreen, but we should not be running after the SPF. Anything around SPF 30 in brown skin people is more than sufficient for us. It is. Provided somebody is pretty much exposed to the sun
all day long they have to be in sun, they should go for something SPF 50 and 70. Somebody has a very, very sensitive skin in sun, they get rashes and everything, should go for higher SPF. But the normal people, for just protection, SPF 30 is sufficient for Indian skin tone, as per the research. And And should go twice a day, as you said, 12 and 5, pretty good. वेरी गुड। यहाँ जैसे कि इंटरनेशनल अगर आप यूएसए में या कहीं भी देखोगे, पीपल दे डू द सनबेथ फॉर टैनिंग ऑफ देयर स्किन, बिकॉज वो हमारी जैसी स्किन लाइक करते हैं, तो दे पर्पसली डू टैनिंग एंड दे डू सनबेथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ They don't like being pale. या। और जो हम इंडियंस हैं, वी आर ऑलवेज रनिंग टुवर्ड्स द स्किन टेक्सचर कि हम Hairs. हाँ फेयरनेस कि हम सारी Hair. क्रीम्स ट्राई करते हैं फॉर द Well, फेयरनेस। that's the society we live in, Never like what we have. हाँ, एंड लाइक टीनेज एज में ये जो एक्ने की प्रॉब्लम है, ये काफी बच्चों को होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो टीनेज एज के बच्चे क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं? The same thing I said, ओके। face wash, moisturizer, sunscreen in the morning, and at night, same face wash, same moisturizer, and some active on the skin. Active, as in teenagers usually have acne. That's what they're suffering from. Or in girls, they might have some kind of pigmentation here and there. So accordingly, they can use an active, but at night time. But they should not bombard themselves with like this serum in the morning, this serum in the night. Just keep it very, very simple and minimal so that consistency is something which matters in skincare. What you're doing consistently for 3 months will show up on your skin. Not that for 10 days you did a 10-step ritual and then you stopped. No, that's not going to be of any use. Do something which can be consistent. एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स कौन से अवेलेबल हैं अगर किसी की बहुत ज़्यादा एक्ने प्रो स्किन है या उसे बहुत सारे एक्नेस हैं अपने फेस पे, तो वो क्या क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ले सकता है? So a complete disclaimer, acne based skin में जो भी ट्रीटमेंट्स करने चाहिए वो क्लिनिक सेटअप में ही करने चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. You should never try at home peels or at home micro needling or anything of that sort. That is not safe at all. So, talking of the treatments in the clinic, you can use, you can get, if you have what kind of acne you have, first of all, assessed in that matter. And then you have acne peels, which are solutions, medical solutions, which are applied on the face and then washed off. They dry out your acne. They kill the bacteria which is causing the acne. They fade away the pigmentation you have because of acne. They help you in that matter. And then we do some carbon peel lasers or Q switch lasers for depigmenting the pigmentation or the marks which are left because of acne. And then we go on to some acne scarring treatment. Somebody has pits because of acne on the face. Then we do some micro needlings, we do CO2 lasers and different types of treatments for acne scarring. So every part of acne is treated with different set of treatments. ट्रीटमेंट और आपके कितने एक्ने हैं उस हिसाब से डिपेंड करता होगा कि वो कितने टाइम में रिजल्ट शो करना शुरू करेगा। And what type of acne you have. There are types of acne. Yes, The okay. doctor sees what type of acne you have. You have nodular cystic acne, you have pustular acne, you have comedonal acne. आपका किस तरीके का एक्ने है, आपकी जो मेडिकेशन दी जाएगी, ओरल मेडिसिन जो दी जाती हैं वो उस पे मैटर करती हैं, आपको जो ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं वो भी उसके ऊपर मैटर करते हैं. सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग यू शुडंट बी दैट आई हैव एक्ने, ओके गो फॉर होम बेस्ड पील्स. There are 20 peels available in the market. Which ones will suit you on your condition? The doctor knows. और कई बारी जैसे कि हम पार्लर्स में जाते हैं या हम सैलून्स में जाते हैं, तो वो अगर हमें थोड़े बहुत भी एक्ने होते हैं फेस पे या कहीं पे, तो दे ऑलवेज रिकमेंड कि मैम आप फेस क्लीन अप करा लीजिए या फेशियल्स करा लीजिए, आपके इतने ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, तो शुड वी रियली गो फॉर दैट? See, something which involves massaging the face is a big no if you have acne. It can be a cleanup, it can be a facial. If it involves massaging, it's a complete no.
Hmm. because massaging leads to clogging of the pores with the gels or creams they're using. So Hmm. it just clogs all the pores and it increases or flares up your acne. So it's Hmm. a big no. Yes, if you want to get just your whitehead and blackheads removed from a parlor, go Hmm. ahead with that. But just check the hygiene first. And also, in that matter, also, they should not be very aggressive that they just create a crater in the face, just removing a whitehead or a blackhead. Hmm. But no to massaging. Okay. And any number one tip that is given by you as a dermatologist to people who have acne-prone skin? My tip would be just keep your skincare a bare minimum if Mhm, you want to get rid of the acne. mhm, Do not use 10 types of serums on your face if you have acne. Your mhm, skin will get irritated. Just keep your products minimal. Something like a basic face wash, toner, moisturizer, and one active at nighttime. That will clear out the acne in no time. But if you are just bombarding your skin with different types of serums and creams and whatnot, you mhm. will just aggravate your situation. Okay, let's come to the third part, that is anti-aging. तो at कौन सी एज में हमें एंटी एजिंग क्रीम्स स्टार्ट करनी चाहिए यूज करना? I think there's no set answer to this question, but I would still say like late 20s will be a good time to start. हम्म, Um, because aging is a ever so evolving process. Like we are aging every single day, even हम्म, from starting we're born. So you start getting some skin changes by late 20s. हम्म, So start using some kind of anti-aging products by I think late 20s or 30s, so is a must. हम्म। तो जो एंटी एजिंग क्रीम्स मार्केट में आती हैं, डू दे रियली वर्क वेल ऑन आवर स्किन? See, depends on what market are you talking about. Are you talking about cosmeceutical market, which is over the counter available, which you can just purchase online, or you're talking about the pharmacological market, which is prescribed by the doctor. So there are two different sets of markets available for anti-aging products. So recently in European countries, there is a regulation where the cosmeceutical companies cannot put a specific percentage of anti-aging ingredients in their products. So I think use of pharmacological products in anti-aging is far better and economical than cosmeceutical market. So just get it prescribed from your dermatologist and keep on using it because you rarely change the anti-aging serums, you know. एक जैसे नॉर्मल कोई भी एक फीमेल है या मेल है जिसको इतना नॉलेज नहीं है, तो वो क्या एंटी एजिंग क्रीम अगर आप मार्केट में जाते हो तो इतना सब मार्केट आजकल प्रोडक्ट से भरा पड़ा है, तो उसको क्या चीज़ लुक करनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स लुक करने चाहिए एज़ अ कॉमन मैम आप क्या बताना चाहेंगी इस बारे में? You should be looking for something called retinols. ओके। The anti-aging ingredient which is हुँ, works best on any kind of skin हुँ, हुँ, is retinol, हुँ, हुँ, and it should be used at night time only, हुँ, never in the morning, हुँ, हुँ, and always with a good moisturizer because it is little drying on the face and causes irritation and redness sometimes. So always with a moisturizer, always at night time, and retinol in all the ingredients of anti-aging. हुँ। और क्या अगर हमारी अच्छी डाइट या हमारा अच्छा वाटर इनटेक भी स्लो डाउन करता है इसको एजिंग को हमारी? I always say antioxidants actually help ओके। in your diet. हुँ, हुँ, And a lot of other factors. There is something called wellness industry these days. It is just vouching on dietary products for anti-aging, for हुँ, all हुँ, the disease management. हुँ, हुँ, Uh, I just would be, partly dependent on that, not completely, but yes, antioxidants in a long run actually have health benefits in aging as well. हुँ, हुँ, So the cellular aging actually slows down if you are taking good amount of antioxidants in your diet. So हुँ, that is research that is proved.
एंड जैसे कि सनस्क्रीन्स होते हैं हम लगाते हैं तो क्या वो भी हेल्प करते हैं हमें टू स्लो डाउन द एजिंग? Definitely, because sun has effect on the cells of skin in damaging हम्म uh, cellular compartments of the skin. So if you are protected through the sunscreen, it does help. It is the number one ingredient after retinol in हम्म anti-age. You should be considering. If you are using retinol at night time, must be using sunscreen in the morning. और एक पेप्टाइड्स भी होते हैं जो हमारी एंटी एजिंग क्रीम में होते हैं तो क्या दैट आल्सो हेल्प्स? Peptides comes third थर्ड, ओके। in the rank order. So first is retinol, then is sunscreens, then is peptides. Peptides are basically they help in the signaling molecules again for cellular aging slowdown. और अगर हमें अपनी यंगर लुकिंग स्किन चाहिए तो आपके लिए क्या एक टिप होगी जो आप रिकमेंड करेंगी? Ma'am, always people think that aging can be slowed down with some skincare products. They'll be using 10 products a day for anti-aging and collagen they're eating and everything they do, but they always forget the workout, हम्म the exercise. हम्म Any sort of strength training. You are into gymming, good for you. You're into Pilates, you are into running, you're into swimming, anything which moves your body, which हम्म strengthens your muscle, which strengthens your core, actually reflects on your jawline and your sagging skin and everything. हम्म Strength training has a role in anti-aging. It has been proven. So if you're working out, that's the only way, and you're eating good, that's the हम्म only way you can prevent aging through your own lifestyle. हम्म Rather than obviously the creams and everything is there to delay. हम्म But in the lifestyle, if you ask me, what do I do to prevent aging? Workout. I think that's the best way to prevent aging. Other than the products, yeah. एंड लाइक कौन सा राइट टाइम होता है फॉर द बोटॉक्स और फिलर्स इन इंडिया कि किस एज में हम ले सकते हैं और आर दे रियली सेफ? Yes, they're safe. If they're done by somebody who's trained enough to do them, they're safe. So I being somebody who injects every day almost, Botox has to be started early. There's a complete myth that I will start Botox and fillers when I turn 50 or probably 60. No, you're pretty late for the train then. You're pretty late, then it's not gonna have effect. Botox is done before setting in the wrinkles. So Botox helps in so the wrinkles basically, if I go a little technical, so wrinkles are two types of wrinkles. One is the dynamic wrinkles, which just come in the starting phase when the skin is moving, and then they set in. The lines set in the skin. They become permanent. Then it's called static wrinkle. So Botox works in the early wrinkles only. It has very less effect on the static wrinkles. So early wrinkles are probably like in their early 30s. So if you're considering, that's the right age to start with your Botox if you just want to prevent all sorts of lines. Fillers depends person to person. I have done fillers on a 25-year-old also. So there is no age. It depends on totally on your need, on your aspiration, what face you want. I am not big fan of overfilled faces and going rampant with fillers. But yes, I have seen faces which actually look wonderful, which is little bit also, and some faces need a lot of filler also to give you a natural look. So it totally depends on the requirement. So what is the complete correct age depends on the requirement. तो अगर एक नॉर्मल पर्सन अगर एक जानना चाहे कि अगर उसे बोटॉक्स कराना है या फिलर्स कराने हैं तो इसकी क्या कॉस्ट आती है? एक रफली कोई कॉस्ट एस्टिमेट होता है? आई नो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट बट स्टिल अगर एक रफ कोई Sorry. It depends on the requirement also. It depends on the training of the injector as well. So the cost of the material is fixed, but the cost of procedure matters. So somebody who is trained enough might charge you a little more, but then you're safe enough because it is an injectable procedure. The hands which are injecting you are
how trained he or she is. Mm-hmm. The cost totally matters on that, and the center and the experience of the injector as well. How many years he's been injecting, what kind of result do you want? It totally Mm-hmm. depends. On an average, I would say the filler costs you as per the syringe, the Mm-hmm. mLs, how much you want. So round about between 20 to 30,000, or Mm-hmm. probably sometimes more as well, for the syringe. And how many syringes are going on in your face depends totally on your requirement. And for the Botox, yeah, generally we put like 50 to 60 units of Botox in the single face. But Mm-hmm. again, depends on your requirement. It costs you around 12 to 15 to probably 20,000 and times Mm-hmm. for the और complete look. ओके एंड क्या ऐसे साइंस होते हैं एजिंग के जो पीपल टेंड टू इग्नोर, आपने देखे हैं अपने करियर में? So, in men and women, both, I would say the first thing which appears is some lines around your eyes when you smile. So, हम्म. when you're smiling, if the very fine lines appear around your eyes, that's probably the first sign of aging, which you will realize. हम्म. Otherwise, there must be others also, which it may be very, very fine, which you may not realize. But the हम्म. lines around the eyes, they are first thing which brings patients to the clinic, हम्म. always. ऑलराइट. And the second thing, which I've seen mostly in women, men are usually not bothered by that. And the second thing I've seen is the folds around the nose. हम्म. And also the jowling, which is the chunk of fat around the, jawline. So हम्म. they think, their cheeks are sagging down. So they come to the clinic for the folds and the sag, which is there around the jawline. So that's 2, 3 things which actually bring the clients running to the clinic. तो इसका रिजल्ट कितने टाइम में शो करना शुरू करता है? जैसे कि कोई बोटॉक्स करा रहा है या फिलर्स करा रहा है या क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स करा रहा है, तो कितने टाइम में इसका So रिजल्ट? Botox, once done, like if it is done today, the complete result of Botox comes within 15 days post procedure. We give 2 weeks for it starts within 5 to 7 days, but the complete results comes between 15 days, lasts around 4 to 5 months. You have to repeat it after 4 to 5 months. And for the fillers, the results are immediate on the table. If I'm injecting, I'll see the results immediate. But yeah, best results, I would say 4 weeks because the filler hydrates and gives even better. But Shilpa, I want to actually add on one thing here. If somebody has aging skin, Botox fillers are beautiful, yes, but that's not the only treatment available these days. There is something called skin tightening machines available where we do not have to inject anything into the skin. It's just machinery, it's lasers, it's ultrasound, it's radio frequency, which tightens your own skin without putting anything from outside. I think they are working beautifully. We have so many examples of celebrities who are getting it done. The results are amazing and non-invasive. आजकल मार्केट में बहुत सारी स्किन टाइटनिंग क्रीम्स भी आई थिंक आ रही हैं जो प्रमोट कर रही है कि आपका स्किन, तो दे आर नॉट बेटर देन क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स, राइट? No, the creams, see, if you just see the dynamics of tightening and lifting the skin, it's not that simple. You have to work really, deeper into the skin level. So creams do not have that kind of penetration. So it's anyways false statement. You know what I mean? Because the creams will be acting on the surface level. How can it just lift the skin like that? You have to do Cannot. something from inside to Something lift. has to go skin deep. We have to go very, very deep, maybe injecting or maybe through machinery, maybe through ultrasound, maybe through lasers, but we have to go deeper to actually tighten the skin. The creams will be, it's complete fake statement. तो क्या ये जो आपने स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट बताया है, इट वर्क्स विद ऑल काइंड्स ऑफ स्किन्स? Yes, technically. और So इस we have a lot of machinery these days. We have HIFU, which is high intensity focused ultrasound. We have MNRF, which is microneedling RF, which is then there is Thermage, which is just done once in a year for skin tightening. You do it once in a year, you're happily going around for a year, and later you can repeat the treatment. So there's amazing technology available. So as per the skin type,
the fat pads. A Mm-hmm. lot of things have to be seen, and then we advise the patient that, this will work good on you, or this combination will work good on you. It's always customized. It's never, this or that. No, it Mm-hmm. actually matters on the skin type, it matters on the fat pads, it matters on the face shape, a lot of things. So it's always customized treatment. Coming to the fourth part, that is pigmentation. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है इंडियन स्किन पर? A lot of factors, again, nutritional deficiencies. We हम्म Indian women are deficient in iron, and we are हम्म anemic. There's vitamin D deficiency, there's हम्म vitamin B12 deficiency because we are all vegetarians वेजिटेरियन, mostly. यस। So yeah, that actually affects the skin. हम्म And hormones. You might have seen a lot of pregnancy related pigmentations, हम्म hormonal changes and during pregnancy, that also leads to pigmentation. So हम्म that's why, like, prone for pigmentation. तो पिगमेंटेशन और टैनिंग और मेलास्मा जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? Thank you so much for this question. I love this question. Because a lot of patients come to my OPD, हाँ। then they say, doctor, we don't have pigmentation. We हम्म just have, tanning. We do not हम्म have pigmentation. Pigmentation is a wider term. हम्म Pigmentation refers to anything which is darker. We call it hyperpigmentation, or we call it hypopigmentation, anything which is lighter than our normal skin tone. हम्म So if you see anything which is darker on the skin is a hyperpigmentation. हम्म What is causing that hyperpigmentation can be different things. हम्म It can be melasma, which refers to your blemishes. It can be tanning. That is also part of hyperpigmentation only. It can be acne related pigmentation. The marks you have, that is called acne related हम्म pigmentation. So pigmentation is a wider term. Then we categorize. It can be melasma, it can be tanning, it can be acne, it can be other things also. हम्म So that's the difference between all that. आपने बहुत सारे लोगों के फोरहेड पे देखा होगा या साइड साइड में पिगमेंटेशंस होते हैं। तो इट्स बेसिकली लाइक बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज, जैसे कि आपने अभी बताया। Uh, जो sides पे pigmentation, or you might have seen some men usually, they have band of pigmentation on their राइट। forehead हाँ हाँ। just above their eyebrows. So हम्म that is not tanning or anything of that sort. That is a condition which is called acanthosis nigricans. So हम्म that is related to insulin resistance. हम्म So that is a completely different condition, which causes velvety, thick, black skin. It हम्म is common in the forehead area. Sometimes you see it around the eyes, a patch, a white patch here, or हम्म sometimes around the mouth, in the neck. Usually people have it, and on the underarms or near the thighs also. So wherever there is intimate, there is, intertriginous areas we call, where the two folds are actually rubbing each other. There you have the pigmentation. So that is acanthosis nigricans. The treatments are available. Some medications need to be given, some creams need to be given, and हम्म some treatment to be done. अगर आपको जैसे कोई माइल्ड पिगमेंटेशन है किसी को, तो जो क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, डू दे रियली वर्क वेल? और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए हमें एज अ नॉर्मल पर्सन एक क्रीम बाय करते समय पिगमेंटेशन के लिए? अगर अगर आप इंडिया में किसी भी केमिस्ट के पास जाओगे और आप कहोगे कि मेरे कालापन है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि हम्म मुझे क्रीम दे, तो हम्म एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि वो आपको स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स देंगे. ओह ओके। So that is the factor you have to take care of. हम्म Because a lot of people do not go to dermatologist or any skin doctor for pigmentation. They go to chemist, and हम्म the chemist usually gives you a steroidal cream because उनको लगता है कि yes, मतलब कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है कि स्टीरॉयड लगाने से एकदम से पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है. हम्म होता है, हम भी मानते हैं, डॉक्टर्स मानते हैं, होता है, बट वो टेम्परेरी होता है. वो हम्म आपको, आप 4 दिन लगाओगे, आपको स्किन क्लीन मिलेगा, हम्म बट वो टेम्परेरी है. वो पिगमेंटेशन दोबारा आएगा,
वो जो स्टीरॉयड आपने लगाया है उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। आपकी स्किन पतली होगी, आपकी स्किन के ऊपर रेड कलर के ब्लड वेसल्स दिखने लग जाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर बाल आ जाते हैं जहां पे भी आप स्टेरॉइडल क्रीम्स लगाएंगे। आपकी स्किन पतली हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू मोर सेंसिटिविटी टू द सन। हम्म सो ये बात का बहुत ध्यान रखना है। डीपिगमेंटिंग क्रीम्स दे रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम दे रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम्म स्टीरॉयड नहीं लेना है। हम्म। पर क्या या पिगमेंटेशन कंप्लीटली रिवर्स कर जाता है? सैडली नो। नो। अगर किसी को ब्लेमिशेस हैं तो आई ऑलवेज स्टार्ट माय ट्रीटमेंट प्लान बाय सेइंग कि मैं इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकती। हम्म सो ओनली कैन डू फॉर यू इज कि मैं इसको फेड कर सकती हूँ इतने एक्सटेंट तक कि ये हम्म आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा इन द हम्म फ्यूचर। कि हम्म आपको जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दैट यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन, यू हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप, वो नहीं आएगा। हम्म बट कंप्लीटली इसको वैनिश करना कई लोगों में हो जाता है। देर आर सर्टन फैक्टर्स के some people just are benefited with just single sitting of treatment, and कई हम्म लोगों में yearly we just give some treatments and still their pigmentation is there on the face. So I really do not claim that I can banish off these street pigmentation. और बहुत से लोग जैसे एलोवेरा है या टर्मरिक का यूज करते हैं, अगर उन्हें कहीं थोड़ा बहुत भी फोरहेड पे या फिर आईज के पास पिगमेंटेशन दिखाई देता है, तो डू दीज थिंग्स रियली हेल्प? See, again, home remedies are good, हम्म safe हैं हम्म in a way. But if you say that turmeric, agar you're using some clinic-based treatments, हम्म you're getting the peels done, you're getting the laser done, और आप घर पे जाते हो और turmeric का powder लगा लेते हो, obviously you're gonna burn the face या because you are under treatment. हम्म Aloe vera hai, it just moisturizes your face. It does not do anything to the pigmentation. Same हम्म। goes with turmeric as well. तो आपके क्लिनिक में पिगमेंटेशन के लिए कौन सा लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है? So pigmentation के लिए जो latest treatment which is available is AeroRace laser. It's Okay. one of the best lasers for pigmentation. हम्म So Kaya is the only chain clinic in India who हम्म has introduced this particular laser. हम्म Earlier, we used to do Q switch laser a lot, laser toning, it is called. We used to do chemical peelings. We do a lot of PRP for the pigmentation on the face. That is like a routine activity. Every single day, I do PRPs for skin pigmentation. So, हम्म but the latest one, the best technology which has been introduced is the AeroRace laser. हम्म। Yeah. तो कितने टाइम पे ये एरोलेस लेजर से लोगों को रिजल्ट दिखने लगता है? Probably in the first sitting as well. Yeah. हम्म So people, earlier we used to do laser toning. Laser toning we do like once in a month, हम्म and twice or 2 or 3 sittings later, patients do have some kind of result after that. But PRP gives you results in first sitting also. So PRP is one of my favorite treatments to do for pigmentation. ओके। और आपका वायरल लाइक टेक ऑन क्या है फॉर वायरल पिगमेंटेशन प्रोडक्ट्स और सिरम्स जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में दीज डेज? Please avoid using steroids on the face in all conditions. Steroids have to be they for the dermatologist, steroids is my best friend when it comes to certain diseases. हम्म Yes, for certain diseases. It हम्म is a life-saving drug. It is हम्म amazing drug if it's controlled. If हम्म it is prescribed by the doctor, it has worked wonders in multiple diseases, not just skin, but orthopedic diseases, rheumatology. So many diseases are treated with steroids, but they have to be controlled. They have to be under the prescription. You just cannot get a steroidal cream from the chemist for pigmentation and keep on using it on the year basis, like 2 years you've used it, or हम्म probably 6 months you've used it without any prescription, without any orders from anyone. That will create mess on the skin. That is a non-treatable situation then. But yes, if I have to give some kind of depigmentation cream, there are other molecules available. हम्म। But steroids is a big no for pigmentation. Okay.
What is your go-to pigmentation tip for Indian skin? Sun protection. If you want to actually treat any kind of pigmentation, the first thing you should be doing is protecting your skin from sun. Mhm, Because sun is a major culprit when it comes to all sorts of pigmentation. It mhm, may start because of anything. It may start because of pregnancy, hormonal changes, nutritional deficiencies. But the moment you go to the sun, the pigmentation worsens, it increases. So, the mhm, only thing you can do, which is very, very safe, is use the sun protection. Sun mhm, protection, sunscreens, and also the physical sun protectant, like use umbrellas or hats or some sunglasses to cover up the skin. Face mask can be used, or a cotton based dupatta can be used, anything which physically also obstructs the sun if you have any kind of pigmentation. Okay. एंड नेक्स्ट राउंड हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है, दैट इज मिथ वर्सेस फैक्ट। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगी, तो आपको बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है, और अगर मिथ है तो ऐसा क्यों है। तो ऑयलिंग योर हेयर विल स्टॉप द हेयर फॉल। It's a myth. Myth. It just nourishes. Nourishes, okay. Only teenagers get acne, it's just a puberty thing. No, everybody can get acne. Menopausal women get acne all the time. Okay. Sunscreen is only necessary if you're going out in the sun or if you are fair skinned. It's a myth. You need sunscreen at all the times. Even if Mhm. you're inside, you're indoors, you need sunscreen. Sunscreen. And using anti-aging products in your 20s will damage your skin. No, not true at all. It So might help you later. help you. The more expensive a care product is, the better it works. No, not really true. The product has to have some good ingredients. That's the only thing matter. Cost does not matter. बहुत टाइम हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हम कहीं भी किसी शॉप में जाते हैं तो कोई स्पेशली विद स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैव सीन इवन विद मी आल्सो कि अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट और वो आपको टेस्ट भी करा के देखते हैं, यू रियली फील कि हाँ ये बेटर है, ऐसा क्यों है? इज देयर एनी मार्केटिंग बिहाइंड दैट? No, I would say again, technology in making that product. So हम्म if I'm not totally against it, like कि अगर मैं कहूँ कि जो सस्ते प्रोडक्ट हैं वही अच्छे हैं, जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनमें सिर्फ मार्केटिंग है, नो। हमें भी पता है कि कुछ महंगा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो उसमें टेक्निकलिटीज यूज होती हैं, मशीनरी यूज होती है, दैट्स एडवांस्ड. हम्म The research which was done after that molecule was advanced. So that's why they are able to actually create some difference in the texture, in the concentration of the things, in testing of the material. So that takes money, and obviously they will be expensive. But just saying that if you are using two retinols and one retinol is costing you $6,000 and the one retinol is costing you 3,000 or 4,000, then the 4,000 one is totally bad. No, sometimes I see very high big brands with a lot of anti-aging products, but when it comes to their ingredients, they do not have a single good ingredient. Then I say, do not just blindly invest in that. You have to check the ingredients. If you think my retinol is good, the texture is suiting me for the 6,000 product, go ahead with that. But just check if that 6,000 product has retinol or not. Just do not just close your eyes and blindly invest. Invest in the ingredients, but if you are getting the ingredient also, and if you're getting the good texture also in an expensive cream, go for it. और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस पॉडकास्ट के लिए, कि एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या पीस ऑफ एक एडवाइस देना चाहेंगी आज की यंग जनरेशन्स को, बच्चों को जो टीनेज एज में हैं या एडोलसेंस एज में वो जा रहे हैं, या फिर एडल्ट्स को, फॉर देयर स्किन एंड हेयर हेल्थ? Eat healthy, work out, protect your skin from sun, and do not blindly follow the social media. It's not true. I think I just summed up everything. या क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया में आजकल कोई भी आकर कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड, राइट?
So people are Yes. just following, and if So someone I'll is just give you saying, an example in uh-huh. here. Social, see, I am a specialist in derma. So Hmm. obviously I know about healthcare, you know, what Hmm. this influencer is talking or not Hmm. talking. So everybody is not a specialist. Some Hmm. people, general public gets confused by all Hmm. that information we are being bombarded with. So Hmm. similarly, I don't know anything about finance. So a few days back, I just saw some reels on Instagram which were talking about finance, that you should be Hmm. investing here and there and all that. Hmm. I listened to them because I was also affected that maybe I'm missing out on something because I don't have any knowledge about this field, Right. you know. So Hmm. I called up my CA. I was like, I just read about it. I because you say you read about it, you never Hmm. say you real about Hmm. that. So I saw it somewhere. I called him up and I was like, I want to do this. Then he's like, no, ma'am, it is the just completely fake statement, whatever they have made. So do not just follow and do other things which we were Hmm. doing already. So that's a good practice that you listen to it, but you talk to your specialist who Hmm. you trust Hmm. and then follow. If that person also says, yeah, follow it, it's a good practice, then do it. Otherwise, just do not blindly follow anything. It's all fake, whatever is going on. It's marketing. Hmm. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दिया है ऑडियंस के लिए एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम I'll be so happy if I'm able to actually help even 10% of people who are listening. It डेफिनेटली आई is. थिंक इट विल हेल्प Thank you so much for having me. थैंक यू हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो या कोई भी कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।